Okay, so let's begin with this computer language. So what does mean by the computer language? So अगर हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलने से क्या होता है कि अगर हम कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहता है, मेल भेजना चाहता है या हेलो करना चाहता है या कंप्यूटर में कुछ भी तुम टाइप करना चाहते हो, देन देयर शुड बी सम लैंग्वेज. ओके, language should be some language so that language should be understood by the other persons. तो ऐसा ही कंप्यूटर में भी कुछ लैंग्वेज है जो कि दूसरा को मतलब कंप्यूटर ही समझते हैं. सो हियर द कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ओके, सो और कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं दिस लैंग्वेज इन दिस द होल सिस्टम्स में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर लैंग्वेज में फर्स्ट क्या होगा, मशीन लैंग्वेज. ओके, यहाँ पे क्या होगा, मशीन. इतना ठीक नहीं है मेरा ये राइटिंग, जस्ट machine language or you can say as a machine code. Okay, so this is the first the language that you will find in the computer language is the machine language or the machine code. So ये machine language or the machine code is known as zeros and ones. That is the binary digit, that is zeros and ones. Okay, और ये zeros and ones only understand by the computer. ठीक है, द कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करेगा जीरोस एंड वंस. एंड देन अगेन पहले क्या होता था कि कुछ भी प्रोग्राम करना चाहता है सिस्टम्स में तो क्या करता है, हमेशा मशीन कोड यूज़ करते हैं या तो मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जीरो और वन. सो अगर हम हेलो किसी को बोलना चाहते हैं, ठीक है, थ्रू दिस कंप्यूटर, तो अगर इफ़ यू वांट टू से ए हेलो, then क्या होगा कि अगर this hello should be written to someone else, then it should be like it should be have this binary number 01101101 कुछ नंबर होगा, बाइनरी नंबर, जिसको हम लोग को याद करना पड़ेगा. तो उसी नंबर को ही ये जीरोस एंड वन को ही डालेंगे, तो क्योंकि जीरोस एंड वंस को ही कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है. सो बेस्ड ऑन दैट इट विल गिव द हेलो टू द from these systems. Okay, so then we can say this machine language code or this of this low language also. Okay, इसको हम low language भी बोलते हैं, machine language, low level language, or you can say the machine code. और this is the machine dependent है. क्यों बोलने से, क्योंकि हम लोग को machine चाहिए होगा. ठीक है, so this is the machine dependent. And then the second one is the assembly language. assembly language. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, what does mean by this assembly language? So as assembly language में we can say this collections of mnemonics, okay, called as the assembly language. So यहाँ पे mnemonics क्या है, mnemonics. Okay, so mnemonics क्या है, mnemonics we can say there's in the microprocessor also you can see there is like add, sub and divide, ऐसा करके कुछ था ना, sub for the subtraction and add, then move and load, LDR, this all are the mnemonics. Okay, that is in the assembly language. And then the third language, okay, the third language that the computer understand is the high level language. High level language. Okay, so you know this is the low level language and this is the we can say the middle language or the assembly language, and that is the high level language. So what does mean by the high level language? Okay, so यहाँ पे high level language क्या होता है, जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, एंड वेरी लाइक टू दिस इंग्लिश लैंग्वेज. Okay, very like to the English language, or you can say this the high level language as a 3GL, that is third generation language. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो पता है कि असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स एड, सब, मूव, LDR होते हैं, और यहाँ पे 3GL में you can see that's if you write in a programming C
जब तुम प्रोग्रामिंग सी या जावा कुछ में करेगा तो यू विल सी लाइक प्रिंट ऐप. The printf means हम लोग कुछ print करने के लिए we are using. So this is the human understandable language. Okay, so human easily understand means a particular command or particular words क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है. And then there is like if else also, if else, and then if else, then do while. Okay, so ये सब है हाई लेवल लैंग्वेज और easily the human can understand this. So यहाँ पे क्या हो गया द मशीन लैंग्वेज. तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज हमको पता है कि ये वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दिस बाइनरी बिट्स. ओके, सो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा लिटिल बिट ईजियर देन दिस मशीन लैंग्वेज. लाइक देयर विल बी सब 8 मूव्स और दिस यू कैन राइट द this what called you can write the assembly language, and then in a high level language it is readable. So like यहाँ पे क्या कर रहा है कि machine language को हम लोग इतना याद नहीं कर सकते, then we proceed with this assembly language. Okay, so like assembly language में तो आ गया है, लेकिन क्या है कि कंप्यूटर हमेशा क्या होता है कि वो जीरोस एंड वन को ही अंडरस्टैंड करता है, दूसरा लैंग्वेज इतना अंडरस्टैंड नहीं है. तो जीरोस एंड वन, दैट मीन्स this has to be convert. Okay, so high assembly language to the machine code अगर हमको convert करना है, then this sub 8 move LDR है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे there should be some translator. Okay, so there is some translator that is known as assembler. Okay, यहाँ पे assembler. Okay, so assembler are the translator that will be like it will take this sub 8 move and then it will convert to the low level language that is understandable by the machine, that is the zeros and ones. Okay, so and then again like this is this assembly language is translated, or you can say means this assembly language is put into the assembler and it is changed to the machine language. And then again same things can be done for this the high level language also. If you write directly high level language in the computer लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको क्या करना है, हाई लेवल लैंग्वेज को भी तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन कोड ही तो अंडरस्टैंडेबल बाय दिस सिस्टम्स है कि नहीं. तो यहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय ओनली द this machine code that is in a low level language. So it should be also translated. Okay, there is some translator through this you can say this assembler is for translating the assembly language to the machine language, or you can say the low level language. And again then high level language को convert करना है to the low level language, then we will use here as a compiler. ठीक है, कंपाइलर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इट विल convert this high level language to the machine language. And then again there is one more translator, that is the interpreter. Okay, there is one more thing, that is the interpreter. Okay, that will be changed to this high level language to the machine language. So just remember one thing that's in this computer language में क्या होगा, there is like translator, that is the compiler and interpreter that will be converting this high level language to the machine language, and then assembly language to the machine language using this assembler. Okay, that means you can say this is of source. Okay, source code, or you can say the source language like the high level language, then it is the destination should be made to the like language. तो हमेशा याद रखा it should be go to the destination to be the machine language. And again from here also you can say that the assembly language is a source language, and then this will be of the destination language. Okay, and always remember that this the assembly language will be always between this the machine language and then high level language. So one thing remember this also, this assembler. Okay, translator. What are the translator? The translators are like the assembler, then the compiler,
and then interpreter. So here we can say this, what does mean by the compiler also and this interpreter also. We can proceed with this topic also. The compiler, you know that the whole source code will read once, okay, whole the source code will read once through this compiler, and then interpreter, it will be execute the line by line, it will execute the code, okay. So this is the difference between this compiler and the interpreter also. And then assembler will be helping this assembly language to the machine language, okay. It will be from this source to this destination. Okay, so these are the some concepts of the computer language. So means the whole brief of this computer language is like machine can only understand this, not machine, this the computer systems can only understand the machine language, the assembly language, and the high level language. Through this you can communicate with the systems. And then internally it should be like assembly language should be put into the assembler, and then it will translate to the machine code. And again for the high level language also same things